Only some very young in the prime of the youth. A few people. In the prime of the youth, they understand there's nothing here. So they decide not to marry. It's only few people do that. They take a Gerwa. This Gerwa is nothing but it's a symbol of I don't want anything from this world. This Gerwa means nothing else. It is telling, it's a declaration that I don't want anything from this world. It's a declaration. External declaration, that's all. But internally, everyone has to practice it. I don't want. A true bhakta will want nothing from this world. You understand the bhakti? True bhakta will never want anything from this world. The true bhakta will want Bhagavan alone. I want Bhagavan alone. So, the world is left behind. True bhakta is a sannyasi. Internally, he is a sannyasi. Sannyas means what? Giving up. Giving up. Giving up. Is it not? Simple. So, internal sannyasa, it should be there. Everybody should be there. Thakur is talking about internal sannyasa continuously. I don't want, because this is not going to make me happy. Simple. So, God alone can make us truly fulfilled, happy, and immortal. This is the simple thing. Sri Ramakrishna gives 5 points. How to, somebody comes, all of you have come? So 3 बज गया ना? 3 बज गया ना? So we can start. Let's start. Paratmanamekam jagadbijamatyam niriham nirakaram omkara vedyam yato jayate palyate yena vishvam tamisham bhaje liyate yatra vishvam. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. See, look at this satsang. For the last 3 days, what have you done? Did you give up something? You gave up something, no? You were doing sannyasa only. For the last 3 days, you left your many things behind. You came here, is it not? You could have been in a shopping mall. You could have been in a cinema theatre. Why are you here, I'm asking you. This is sannyasa. Is it not happening? Last 3 days, what happened? You tell me. This is sannyasa. Sannyasa means what? No, your whole focus is attention on God. I don't want more. Last 3 days, you were all sannyasis, but without wearing gerba. Am I wrong? You understand? Last 3 days, what did you do? You gave up. You were trying to. I won't say that you have completely given up, but you were trying. That striving itself is sannyasa. No one becomes perfect in even sannyasa also. It takes time. Giving up is not that easy, because it's a long drawn old samskaras. It happens slowly. But that giving up is sannyasa. So through this satsang, what was happening? Unconsciously, you were all practicing sannyasa for the last 3 days. Is it not? You were not thinking about worldly things. You were not enjoying so-called worldly things. Is it not? Sannyasa. This is the precondition for self-realization. But for that, you don't have to put on Gerwa, no. But internally, this should go on. Even after you go back, this should go on. It should continue in your own family system. So Sri Ramakrishna was once asked that Thakur, how to fix the mind on God? And he gave 5 points. In that, the first point is what?
He says, सब समय भगवानेर नाम गुणगान करते होबे। सब समय, হ্যাঁ? अब सब समय भगवानेर नाम गुणगान करते होले तारे संसार থাকবে? Sannyas. You will see this is sannyas. Indirect. If you are continuously 24/7, if you are constantly thinking about God, will there be word in your mind? You have given up the word. Means not to think about the worldly pleasurable objects. सब समय যদি ভগবানের চিন্তা করলে তো সংসারের কাম কাঞ্চনের চিন্তা থাকবে। Automatically it is given up. It is sannyas. Second point he is saying, निर्जन वास करते होगे. Nirjan vas means ekant vas. Now see what you are doing here. Nirjan vas. Is it not beautiful? What happened in this Nirjana vas? For the time being, you are giving up all those worldly things. Is it not? It is samnyas. Samnyas means properly giving up. Giving up the worldly things. Third point he says, satsang korte hobe, sadhu sang korte hobe. Sadhu sang korle, when you do sadhu sang, are you thinking about worldly things or about God? So the world and worldly things is given up. Sannyas. All these things are what? It is all prescriptions of giving up something and holding on to something. Is it not? This giving up is sannyas. Giving up, giving up, giving up. I don't want this mithya dimension because this is the cause of suffering. So the third point is sadhu sang. Fourth point he says, vivek and vairagya abhyas korte hobe. Vivek and vairagya, you know. Vivek and vairagya means what? Giving up that which is mithya and holding on to that which is satya. Again, it is giving up, it is sannyasa. Without wearing girva. Understand? Fifth point he says, how to live in this world? Live like the maidservant walking into rich man's house. Beautiful. Pakal macher moto thakte hobe, bodo badir dasir moto thakte hobe in Bangladesh. Everywhere in these points you will see there is giving up of something and holding on to something. This giving up is what? Technically it means sannyas. So Shankaracharya says without sannyas nobody can realize God. Is it wrong? It is simple. It's a psychological principle. Only thing is, Sri Ramakrishna is not using the term sannyas, but he is constantly talking about sannyas without using the term sannyas. So it seems that something as if Sri Ramakrishna has spoken something. No, it's all the same psychological principle actually. Unless you give up that which is unreal, we will never be able to understand what this God is. This is very important. So before we go ahead, I just want to take up one more verse. Afterwards, you can ask your questions. This verse is so interesting. Verse number 31. 31. Can you just find out from your printouts? Verse number 31. This is the very interesting statement made by Shankaracharya. You have got it? 31. In the printout it should be there. Then it should be there. 31 नहीं है? 30 है महाराज, 33 है, 35 है। लास्ट में आप सीक्वेंस में मत जाइए, वो सीक्वेंस में नहीं है, आप थोड़ा सा अंत की तरफ जाइए। लास्ट पेज का थर्ड वन। हाँ, लास्ट पेज का थर्ड वन देखिए। हाँ, है ना, मिल गया? अच्छा, देखिए ये जो भगवान शंकराचार्य जी को पूरे विश्व में सबसे बड़े ज्ञानियों में माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ अद्वैत ज्ञानी। वो सबसे बड़े भक्त थे। This we don't understand. We don't talk about. He was one of the greatest bhaktas of all time. That is the beauty. When we have Advaita Jnana, then alone true bhakti also comes. As I told, I discussed this point 2 days back, if you remember properly. This was discussed in Bhagavad Gita also. Because when you have Advaita Jnana, what is Advaita Jnana? You understand God alone is existing.
Is it not? To put it simply, I'm not going to. Advaita means God alone is existing, nothing else is existing. And if you are convinced that God alone is existing, what other option do you have other than becoming a natural bhakta? You have no alternative left. नहीं तो भगवान भी है और जगत भी है, तो आपके पास चॉइस है, मैं या तो भगवान को पकड़ूंगा या तो जगत को पकड़ूंगा। अद्वैत में क्या है, जगत नाम का कोई चीज ही नहीं है, भगवान ही है, आपके पास दूसरा चॉइस ही नहीं है। यू विल बी ए भक्त। भगवत गीता स्टेटमेंट, इफ यू हैव टू थिंग्स, अच्छा भगवान भी है और जगत भी है, सो यू हैव अ चॉइस। ठीक है भाई, भगवान तो नहीं मिल रहा है, ठीक है, कम से कम जगत को पकड़ लो, और जगत को पकड़ने का क्या परिणाम होता है हमें पता है। बट इट इज ट्रू अद्वैतियन हु विल बी अ ट्रू भक्त, बिकॉज फॉर हिम द जगत डजंट एग्जिस्ट एट ऑल, इट्स ऑल गॉड एंड गॉड अलोन, ही इज नेचुरली भक्त। सो इट इज ट्रू भक्ति कम्स फ्रॉम अद्वैत। So Shankaracharya makes this beautiful statement here. What a wonderful statement. Verse number 31. What does he say? He says, Moksha karana samagriyam bhaktireva gariyasi swaswarupānusandhānam bhaktirityavidhīyate. What is the meaning of this verse? Extremely beautiful verse. Shankaracharya is saying, मोक्ष हमारे जीवन का लक्ष्य है, मोक्ष हमारे जीवन का लक्ष्य है, और इस मोक्ष रूपी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितने साधन उपलब्ध हैं, उन सभी साधनों में से सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। भक्ति है मोक्ष प्राप्त करने के साधनों में से सर्वश्रेष्ठ साधन। What a beautiful statement it is. Bhakti is the best way to attain moksha, he says. But what do we mean by bhakti? Is it using God for the worldly purposes bhakti? That is not bhakti. Understand the meaning of bhakti correctly. Swaswarupānusandhānam. That one-pointed wanting of Bhagavan and Bhagavan alone, that is called bhakti. Ishvara-anusandhanam, Bhagavat-anusandhanam. Swaswarupānusandhanam matlab Bhagavat-anusandhanam, Ishvara-anusandhanam. Anusandhanam means one-pointed, focused. Two things, one-pointed and unbroken. One-pointed means focused. And unbroken. Anusandhana means pursuit of Bhagavan and Bhagavan alone. That is known as bhakti. मतलब वो जो एकाग्र चित्त से, अनन्य भाव से मुझे ईश्वर को ही प्राप्त करना है, जगत नहीं, यह जो भाव है इसको भक्ति कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमें सोच लेना चाहिए कि हम लोग भक्त हैं क्या, कि भक्ति के डेफिनेशन में हम लोग फिट होते हैं क्या। See, these are all definitions to see हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ये सब पढ़ाई किसके लिए है, so that we can check and compare where do we stand, what is the ideal and what is where I am standing, so that I have to improve. इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। We are all incomplete, we are all deficient. हमारे अंदर सब अपूर्णता है, डेफिशिएंसी है, कोई बात नहीं। लेकिन इसको पढ़ करके हमारा पिक्चर क्लियर होता है कि मेरे अंदर जो कमी है, whatever shortcomings I have not improved on that. That is the reason we are studying this, is it not? Why the satsang? Satsang is meant to bring clarity about spiritual matters, so that then we begin to strive in the right direction. That is the main purpose of studying this. So what is bhakti? Swaswarupānusandhāna means Ishvara-anusandhāna. भगवत गीता में भी ये बात आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभं पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। भगवान को कैसे प्राप्त, भगवान की भजना कैसी करनी है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः। इसमें 2-3 शब्द है। एक है अनन्य भाव से, अनन्य भक्ति,
मतलब भगवान से अन्य कुछ भी नहीं चाहता हूं, भगवान को ही चाहता हूं। समझ रहे हैं भक्ति क्या है? भगवान से अन्य मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं भगवान को ही चाहता हूं। ऐसे नित्य और सततम। सततम मतलब सब समय, और नित्य, इट शुड गो ऑन अनसीजिंगली। ऐसा जो भाव है, ऐसा जो भगवान की भजना करता है, ही इज भक्त। इज भक्ति इजी? वी हैव बीन टॉट कि भक्ति तो बहुत इजी है। किसने कहा भक्त? अच्छा, भक्ति कोई भी मार्ग अगर इजी होता तो फिर सभी को भगवत दर्शन हो जाना चाहिए था। होता है क्या? नहीं होता है। लेट अस सी, वी आर जस्ट टॉकिंग वेरी ब्लैक एंड व्हाइट। एक्चुअली स्पिरिचुअल लाइफ की जो बेसिक कंडीशंस फुलफिल किए बगैर इसमें सफलता किसी को भी नहीं मिलता। भक्ति हो या ज्ञान हो या कर्म हो या त्याग हो, ध्यान हो, जो भी मार्ग है, उसका जो बेसिक फाउंडेशन त्याग ही है। त्याग के बगैर ना तो ज्ञान होता है, त्याग के बगैर भक्ति संभव नहीं है, त्याग के बगैर ध्यान संभव नहीं है, और त्याग के बगैर निष्काम कर्म भी संभव नहीं है। देखिए, ध्यान की समस्या, आप बोल रहे थे कि ध्यान करते हैं तो पूरा संसार आ जाता है। क्यों? त्याग का अभाव। अगर मन से अगर हम सब कुछ छोड़ देते हैं तो फिर ध्यान आसान होता है। क्यों हम ध्यान में फेल होते हैं? हम जब मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं तो पूरा संसार मन में, कहाँ भगवान है? मन तो बस घूम रहा है, बस घूम रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? त्याग और वैराग्य का भाव। और त्याग और वैराग्य होने दो, ऐसे मेडिटेशन हो जाएगा। It's no joke. These are all matter to be verified. So we should know what is, we should diagnose the problem and we should know the solution. जैसे मैंने कहा था ना, शायद इस क्लास में बताया था कि अर्जुन ने क्या प्रश्न किया था कृष्ण से कि मेरा मन तो बहुत चंचल है, मैंने लिया था, वायु के सदृश है। तो क्या श्री कृष्ण ने क्या, उसका समाधान क्या था? वैराग्य और अभ्यास। वैराग्य के अभाव में कभी भी मेडिटेशन हो ही नहीं सकता। मेडिटेशन आंख बंद करने की बात नहीं है। मेडिटेशन करने से पहले कुछ ग्राउंड वर्क करना पड़ता है। वो ग्राउंड वर्क है वैराग्य। जितना मन वैराग्य संपन्न होगा, मेडिटेशन उतना ही इजी है। जिसको संसार नहीं चाहिए उसके लिए तो कोई बाधा ही नहीं है। इट विल बी सिंपल। ये संसार के प्रति हमारा जो आकर्षण है या आसक्ति है, यही ध्यान में भी बाधा है, भक्ति में भी बाधा है, ज्ञान में भी बाधा है। You understand? Unless this is given up, we may do everything, but the real experience of God, you can have conceptualized ideas in your mind, but experience will never come. नहीं आएगा। आप मंदिर जाते रहेंगे, ये करते रहेंगे, वो करते रहेंगे, लेकिन अनुभव नहीं आएगा। तो एक्चुअल स्पिरिचुअल लाइफ इन अ वेरी सिंपल वे, उसका फाउंडेशन त्याग ही है। उसमें अभी आप ऐसा भेद मत कीजिए गृहस्थ और सन्यासी का, नहीं। हम मनुष्य हैं और मनुष्य जीवन त्याग के लिए है, योग के लिए है, और इसकी क्षमता हम सबके अंदर है, सबके अंदर है। हमने यूज नहीं किया, इतना ही। हम अगर इसको यूज करना शुरू कर देंगे, देखेंगे आपका जीवन ऊपर उठने लगेगा। जहां है वहीं से ऊपर उठने लगेगा। कहीं जाना नहीं है, कोई परिवार को छोड़ना नहीं है, सब कुछ अपने अपने जगह पे है। These are all internal developments, internal transformations. ये ऐसे चीजें हैं, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हैं कि बगल वाले व्यक्ति को भी पता नहीं चलेगा। What wonderful changes have come. बाहर से किसी को पता ही नहीं चलेगा। Inside you are completely detached. Outwardly, no one will be able to make out. It's a beautiful thing. It's a wonderful thing. मैं सब समय कहता हूँ, when you practice detachment, the husband should not go and tell the wife, okay, from tomorrow I am going to be detached. ऐसी गलती मत करना, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपका खाना पीना बंद हो जाएगा। These are all to be done internally. The other person will not even come to know about it. Detachment is an internal quality of the mind. No one will even know. You will be a perfectly free and detached person. Outwardly, you are with everybody, doing all your duties properly.
You're taking care of everybody, but internally you know none of these belong to me. These are all just 2 minutes drama going on. Everything will be over like this. ये सबसे रिश्तों के समान है. This is the art of living, which Krishna teaches in the Bhagavad Gita. Okay, now we can ask some questions. We have some time. Acha, one thing, questions, let the questions be focused upon what we have discussed. Huh? Don't ask questions outside of our main focus. Don't lose the focus. Don't ask random questions. Questions have to be focused on what we have discussed. Yes, yes, sir. Yeah. I have a very simple question. Yeah. After death, what happens to mon, buddhi, chitta, ahankara? Okay. Okay. Simple question. Now, actually, this we have not discussed yet, but this is a question which everybody should know. Means what it is a complete, it's a subject of reincarnation or rebirth. See, at death, what happens? Simple thing. We have studied gross body, subtle body, and causal body. This structure is made up of 3 bodies actually. We are only seeing the gross body here. But behind this, there is the Sukshma Sharira and Karana Sharira. Death means nothing. See, actually, death से भी हम लोग इतने घबराते हैं. Wise man will never be afraid of death. There is nothing to be afraid of that and nothing to be mourning about death. इसमें दुख करने के लिए भी कुछ नहीं है. कृष्ण भगवान अर्जुन से ये कहता है, तू क्यों रोता है? जो बुद्धिमान व्यक्ति है, मरे हुए व्यक्तियों के लिए भी रोता नहीं है और जीवित व्यक्तियों के लिए भी रोता नहीं है. भगवद गीता में है ना, नाम शोचन्ति पंडिता, क्या है वो सेकंड चैप्टर, जो भी है उसका मूल अर्थ ये है. Why? It's all wisdom, wisdom. What is death? A beautiful verse. What is death? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि. What does it mean? हर रोज हम लोग नहाते हैं कि नहीं? नहा करके हम लोग क्या करते हैं? पुराने कपड़े चेंज कर देते हैं, नए कपड़े पहनते हैं. पुराने कपड़े पहन के तो कोई रहता नहीं है. पुराना कपड़ा जो पुराना हो जाएगा तो उसको फेंक देते हैं, नया कपड़ा पहन देते हैं. मृत्यु में क्या होता है? ये जो स्थूल शरीर जो है इसको हम छोड़ दे रहे हैं और एक नया स्थूल शरीर हम ही बनाते हैं. हमारे ही किए हुए कर्म और संस्कारों के अनुसार हम ही एक नया शरीर बना देते हैं. तो मृत्यु के समय में क्या होता है? ये स्थूल शरीर पीछे छूट जाता है. सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जो है वह इसको छोड़ करके एक नया शरीर बना देता है. इतना ही, और ये चलता रहता है. अब देखो, हमें इसका ज्ञान भी नहीं है. हम कितने कोटि शरीर इस तरह हम बना चुके हैं. अब ये शरीर है तो हमको लगता है ये मेरे हैं. How many husbands and how many wives and how many children we had in the past life? Every time we are in a certain body, we think this is my child, my husband, my wife. कितने शरीरों में कितने पति, कितने पत्नियां, कितने बच्चे हमारे हो गए अतीत में, हमको याद नहीं है. This is the सिद्धांत. सो मृत्यु में क्या होता है? ये स्थूल शरीर जो है ये छूट जाता है और हमारा जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है वह नया एक स्थूल शरीर बना देता है. इसमें से और एक चीज हम लोगों को सीखना यह है. देखिए, ये जो शरीर है, आप सभी का जो शरीर है, ये आपने खुद बनाया है. ये शरीर का एक रोम, इट्स माय ओन क्रिएशन. ये आपका, इट्स योर ओन क्रिएशन. इट्स अ क्रिएशन ऑफ योर ओन कर्म. When we have done good karma, you get good. Out of that, a good body is made. When we do bad karmas, out of that, defective gross bodies are created. So, जैसा कर्म होता है उस प्रकार का शरीर मिलता है. जैसे मैंने कहा, अगर हमारा बहुत क्रूर कर्म हो तो हम पशु शरीर में भी जन्म ले सकते हैं. ये सब संभावनाएं हैं, ये सब हो सकता है. तो इन शॉर्ट, मृत्यु में होता क्या है? ये स्थूल शरीर पीछे छूट जाता है, मतलब छोड़ दिया जाता है, और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जो है वो एक नया एक स्थूल शरीर बना देता है. तो सूक्ष्म शरीर रहता है, अपने जगह पे रहता है. हमारा संस्कार इसमें कैसे आ जाएंगे? ये कहते हैं कि संस्कार, बिकॉज़ सूक्ष्म शरीर संस्कार उसका पार्ट नहीं है. वही तो है ना, सूक्ष्म शरीर संस्कार ही है और कुछ नहीं है. सूक्ष्म शरीर ही संस्कारों की पूंजी है.
संस्कार जो है वो सूक्ष्म शरीर का ही अंग है. Maharaj ji, एक one by one, आप बोलिए. so I have one question. You emphasized a lot on Maya, and you also mentioned that Maya is Shakti. So I'm starting to understand from Ma Sharada's perspective, because Ma Sharada is Shakti, but Ma Sharada's role as Maya. If you can talk a little bit about that. Wonderful, it's a wonderful subject. See, once somebody asked Ma Sharada, if you say, Ma Sharada's life is another, okay, thank you for asking this question. Ma Sharada's life is a wonderful, amazing life. Why not? ये जो हम डिटैचमेंट की बात कर रहे हैं, look into her life. She is managing the whole family. She is doing everything, kitchen work, grooming, cleaning, children, this relative, that relative. But she is absolutely non-attached. Outwardly, if you just see, it may seem as if she is deeply attached, but inwardly she is absolutely non-attached. She is one of the finest demonstration of what is detachment. Is she not taking care of her family? Tell me. Is she wearing Gerua? She is a sannyasi without Gerua. Sannyas means what? Absolutely no interest in worldly things. Any interest in worldly things? Do you find in Sri Sharda Devi? Any worldly desires you find in Sharda Devi? This is sannyas. Demonstration. You don't have to wear Gerua for it. Is she running away from the family? She's not running away from the family. She's taking care of the family. But she's absolutely detached inside. So outwardly, people used to feel that, what is this Ma every day? Whole day she would keep on saying Radhu, 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 Radhu. And people used to feel that she is deeply attached and bound. So someone came and asked her, okay, Ma, what is this whole day you are saying Radhu, 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 Radhu? You are so attached to, you are fully in Maya. So Ma says, my dear child, you don't know, I am Mahamaya. Maya. This Maya is what? It is inscrutable. As I said, its function is two-way. Now, देखो ये बड़ा विचित्र है, इसके लिए ये हमारे बुद्धि से समझने वाली बात नहीं है. ना तो माया को बुद्धि से समझा जा सकता है, ना ही ब्रह्म को बुद्धि से समझाया जा सकता है. Both the things are transcendental actually. So let us not try to understand it, but it's a fact of experience, it's a phenomenon. We can try to just form some kind of a, what should I say, some conception about it. What is this Maya? ये जो शक्ति जो है जिसके बारे में हमने बात किया, यही बांधती भी है और यही हमें मुक्त भी करती है. She binds, she liberates. She binds by her avidya shakti and she liberates by her vidya shakti. This very Maya has got its two dimensions. Through her avidya shakti, she binds us. See, we are all bound. As long as our avidya shakti is functioning, we will never come to know what the reality is. And through her own vidya shakti, she will liberate us. So she is both the karana of bandha and she is also the karana of mukti. You may say, then why she has kept us in bondage? There is no question of why and how. It is simply a fact of experience. That's right. Because we cannot say why and how, that's why she is called as Pagli. She is beyond rhyme and reason. There is no, if we are asking these questions, but from her perspective, it is, now actually we have not gone deeper into it. That is the problem in this, our discussion. We have touched upon only certain important points. There are other points also which needs discussion, which is not now possible in this matter of few minutes. It won't be possible. For the time being, itna samajh ke rakh lo, Maya is that which binds, and Maya is also that liberates. And this, whom we call Ma Sharada, it is believed that she is the very embodiment of that Paramesha Shakti which we have discussed yesterday. She is the incarnation or the special manifestation of that Shakti. And this time she has come to give knowledge. That's why she is also described as Jnanadayini. She is described as one who is Jnanadayini. She is Sarada.
She Saraswati. These are all different descriptions. She Sarada. Sarada means one who is the giver of Sara. Sara is Gyan. She gives us Gyan, she keeps us in Agyan. It is all her play. That is why we have to pray to her. What will you pray to her? Give me word, give me this, give me that. Don't do that. Don't commit that mistake. When you pray to her, pray for only what? Ma amake vivek da, amake vairagya da, amake bhakti da, amake gyan da. Do not pray for anything else. Don't make that mistake. Any of you ask me? Maharaj, we get confused between duty and attachment. Ah. We say that this is our duty, this is my duty, and at times we think that we are getting attached to it. So how to draw a line between attachment and duty? See, now first of all, attachment I have already spoken about. So at least I hope you have some idea about it. Let me talk about this idea of duty. This duty is so much glorified. मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है. Is it not? Duty is so much glorified. क्या है, घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, बीमार पड़े हुए हैं. अभी मैं कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, थोड़ा हटिंग होगा, प्लीज डोंट माइंड. सच्चाई है. बड़े बुजुर्ग हैं, आजकल के यंगस्टर्स हैं बहुत सारे, बड़े बुजुर्ग हैं, बीमार पड़े हैं, ऐसी बीमारी है कि जो दूर नहीं होगा, तो बिस्तर पर है. तो आजकल के नहीं, कुछ ऐसे बच्चों को लगेगा कि he doesn't want to actually do something for, because the person is on the bed, nothing is happening, bedridden for months together. So some children may feel, अरे मेरा ड्यूटी है, मुझे करना है, तो कर रहा हूं. करने की इच्छा नहीं है, एक्चुअली खुशी से नहीं कर रहा, लेकिन क्या है, मेरा कर्तव्य है, अरे मेरा कर्तव्य है, मेरा ड्यूटी है, करना पड़ रहा है, मैं कर रहा हूं. So in this idea of duty, there is an idea of compulsion. You feel compelled. Is this a good way of acting? Absolutely no. We always use this word, I am duty bound, I am duty bound. Why should you be duty bound? We have no duty towards anybody. What do we have? Then what do we do? Exactly. We have no duty towards. The son should not have a dutiful attitude to the father. But what should the son do? If the son begins to see divinity in the father, and he is not serving the father out of a sense of compulsion. The sense of compulsion, is it a good thing? आप करना नहीं चाहते हो, लेकिन क्या है, ड्यूटी है, and I am compelled to do some seva. That is a horrible attitude. Why should you be duty bound? We should be doing the same act out of a sense of worship. That old man who is bedridden is God in a certain form, and I want to serve God in that form. Now that person will do it happily, not out of a sense of being compelled. Which one is better? And when you are doing it happily, gladly, seeing the divinity, you're seeing God. That's why we should first have the right conception of God. God is not only one photograph. These are all forms of God. Look at God with open eyes. As I said when I was talking about Parmeshwar Shakti, we are seeing God, only we are not understanding it. This is what Shankaracharya teaches. See God with open eyes. What are we seeing? It's just nothing but God and God alone. You are not understanding this point. जगत कहाँ है? हमारी ये गलत धारणा है कि जगत है. ये तो भगवान ही तो है. ये तो वेदांत का सबसे बड़ा टीचिंग है. भगवान ही तो है. But we are not understanding it. Why we are not understanding it? Because we have not done certain groundwork. स्वामी विवेकानंद का प्रसिद्ध एक कविता है ना, बहुरूपे सम्मुखे तुम्हार छाड़िए कोथाय खोजिचो ईश्वर. सुना है? अरे ये तो सामने भगवान आपके सामने है, आप कहां भगवान को ढूंढ रहे हो? आप एक फोटोग्राफ में. Don't limit God in a photograph. It's all God and God alone. See with open eyes, we are dealing with God. अभी आपका सारा जो एक्शन जो भी होगा, it will be पूजा.
When the son is serving the father, it will not be out of duty, but it will be an act of worship. First, change the vision and see your every action will become an act of worship. It will be an act of continuous prayer. Vision has to be changed. We are living in a dream world. We are thinking we are God को ढूंढना है यहाँ वहाँ नहीं. हम भगवान को ही तो देख रहे हैं. शंकराचार्य says, आज तक हमने भगवान के अतिरिक्त हमने कुछ अनुभव किया ही नहीं है. Upanishad says we are always seeing God, but we are not understanding it. God in so many forms. It's one Brahman playing in so many forms. But why is that we are not understanding it? Ignorance. So, उस ignorance को दूर करने के लिए ये सब सारी चीजें, ये सब साधना उसी के लिए. So, at least try to understand that. So, you see, you're trying to ask this question: what is the how to attachment? अब attachment आएगा कैसे? When you see everything as God. It is good to be attached to God, but not to a human being. Attachment is always with a human being. But when you see everybody is God, where is the room for any attachment? These are all extremely subtle things. First of all, give up this idea of duty from your mind. Swami Vivekananda has spoken very harshly about duty. Harshly. हम लोग usually समाज में duty को बहुत praise करते हैं. अरे कर्तव्य परायण, duty परायण. क्यों duty करोगे भाई? हम गुलाम हैं किसी के? Are we slaves that we will be duty bound? Why duty bound? Let us worship God lovingly and voluntarily. It's all such a positive attitude. It's all change in attitude. हम जो भी करते हैं हम खुशी से करते हैं क्योंकि सब कुछ एक ईश्वर तत्व है. एक ही ईश्वर तत्व है इतने सारे रूपों में. हम उनकी पूजा करेंगे. कोई बीमार है तो हम उनकी सेवा करते हैं. वो सेवा नहीं, वो पूजा है. आप बच्चों को पालते हैं, वो बच्चों का पालन नहीं है, आप ईश्वर की पूजा कर रहे हो. Change the attitude and see what happens. There won't be any attachment. And you're not working out of duty, but you're working out of a sense of love for God, which is expressing in the form of service, selfless service. सब कुछ change हो जाता है. Whole life itself becomes spiritualized. These are the amazing transformations. This is spiritual life. This is how we have to spiritualize our day-to-day life. Any other question? Yes, you ask. Knowledge in this. I come back to the same subject. With the subtle body leaves this sharing, then you said that it takes another form by itself. It constructs by itself, and it's the shape. It takes shape in some other womb. It goes and takes place. Say, who decides that it has to go to that particular womb? Who decides whether I have to go to Germany or I have to go to the Chamba village? So this is. See, now once this your karma. Now, if your karma is such that when your karma if your karma's phalam is going to be of certain kind, just according to the requirement of your karma's fructification, karma है और कर्म को fructify होना है. लेकिन fructify होने के लिए जो एक womb की जरूरत है, वो उसके अनुसार एक womb भी वहीं पर रेडी होता है. मैं तो ध्यान से सुन लीजिए बात. हम अपने ही कर्म से अपने सराउंडिंग को भी क्रिएट करते हैं. हमने जिस प्रकार का कर्म किया होगा, अब उस कर्म को फलीभूत होने के लिए जिस वातावरण की आवश्यकता हो, वो जो जीव है उसी वातावरण में जाकर के जन्म लेता है. आपने किया हुआ कर्म जो है, उस कर्म के फल का फलीभूत होना मीन्स fructification of the karma which you have done. For the fructification of the karma which you have done, the kind of environment which is needed, it is also destined by your own karma, and it is somewhere it is there. And this is a divine connection. जैसा इसको environment चाहिए, बिल्कुल उसी environment में जाकर के वो जीव वह प्रवेश करता है.
तो वो एक विशिष्ट गर्भ उसके लिए निर्धारित, वो स्वयं निर्धारित करता है Who does वो the किस गर्भ में प्रवेश करेगा, वो किसी प्राणी के गर्भ में प्रवेश करेगा, किसी बुरे योनि में प्रवेश करेगा, या किसी देवता के योनि में प्रवेश करेगा, किसी देवी के योनि में प्रवेश करेगा। वो जो वातावरण है उसी का कर्म उसको निर्धारित करता है, और उस प्रकार से वो जाकर के वहां पर वो एक संयोग है, इट्स अ कनेक्शन। द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस कर्म टू फ्रक्टिफाई। That environment is somewhere is getting ready. It will be ready by the time when the body is dead. And exactly the jiva will go to that place where its karma can get fructified. But there has to be a control center. Like He That's all enough. Next question. These are basic principles. Yes, you ask a question. So when you have talked about praying to God to ask for vivek and vairagya, now if someone prays to God for the betterment of others who are not that well off or suffering or not having food to eat, is that wrong? No, it's better. Better than any unselfish, when you're not praying for your own selfish things. That is always good. In fact, Vedanta encourages us to pray for Sarve Santu Sukhina, Sarve Santu. That should be the prayer. Otherwise, क्या है हमारा prayer क्या है? God, save me and my wife, my son and his wife, we four and no more. ये नहीं होना चाहिए. This is a horrible prayer. This is a horrible prayer. Please don't do that. अमार छेले के रखा करो, अमार नहीं के रखा करो. No. You have to pray for Sabhai ke rakha. If at all you want everybody's protection, then pray for everybody's protection. May everybody be happy. May everybody be free from suffering. That is a good prayer. But the ultimate prayer will be, with this you can combine Vivek, Vairagya. Ultimately, Bhakti, Vivek, Vairagya, Bhakti and Gyan, that is the most superior prayer. Along with that, you can combine कि God, may no one suffer in this world. किसी को भी दुख ना हो, किसी को भी कष्ट ना हो, सब सुखी रहे। ये बात, सब सुखी रहे, सिर्फ मेरे परिवार नहीं, सब सुखी रहे। This should be the Maharaj, my question is, during meditation, how does the buddhi function? buddhi function. See, first of all, what do you understand by buddhi? You are using the term buddhi, but what do you mean by buddhi? First, just let us get that point clear. What do you mean by the term buddhi? Is it clear to you? You say, how is buddhi function? Are you specifically asking buddhi, man, antak, chitta and ahankara? You are asking one of the components, or are you asking how is the antakarana function? These are all, we mix up so many things. We are asking this question, how is buddhi functioning? Buddhi is one of the components of the antakarana. We discussed this point. So what do you mean by this buddhi? Be very clear in your question. There will not be the right answer. Because during meditation, we all know that the mind keeps fluctuating. Now see, again you are using the word mind. We have seen these are all technical things. Manas is different, buddhi is different. So see, the question also has to be some clarity also with it. So what actually you are asking is, as I am guessing out, what is happening to the antakarana, this inner instrument, which is one instrument. When meditating, what is happening to antakarana, in which buddhi is one of the components. Again, mind is another component. Chitta is the third component. Ahankara is the fourth component. Four of them put together is what? Antakarana. There is one subtle instrument, the subtle inner instrument. Now the thing is, this state of inner instrument today, it is chaotic. Why it is chaotic? We have made it chaotic. Nobody else has made it chaotic. We have made it. अब आँख बंद करके देखिए अंदर क्या चल रहा है. आप उसको बुद्धि मन सब छोड़ दीजिए. अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, एक सटल बॉडी है जिसमें तूफान मचा हुआ है कि नहीं? सब है तूफान मचा हुआ है. आप आंख बंद करते हैं तो तूफान और भी बढ़ जाता है. इनफैक्ट ऐसे समय में इतना तूफान नहीं लगता है आपको. जब ध्यान करने बैठो तो तूफान और जोर से आने लगता है. This is happening. This is happening. Why is this happening? Again, I have already given the answer.
एब्सेंस ऑफ वैराग्य। हमने अपने इस मिथ्या जगत से अपने आप को इतना जोड़ लिया है, तो जब आंख बंद करते हैं तो पूरा ये मिथ्या जगत अंदर तूफान मचाती है। तो आप आंख बंद करते हैं तो सारा जितना सोच है, जितने नाम रूप, जितने सब चेहरे, सब आने लगते हैं आपको खाने के लिए। भगवान नहीं दिखता, बाकी सब दिखता है, क्योंकि हमने इन लोगों से कनेक्शन बना के रख दिया है, मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा। दैट इज व्हाई दिस chaotic कंडीशन ऑफ द अंतःकरण। अब ये एक दिन में क्योर नहीं होने वाला है, ये भी मैं बता देता हूँ, ये एक दिन में क्योर नहीं होने वाला है। वी हैव टू लीड अ लाइफ व्हिच इज बेस्ड अपॉन नॉट माई एंड मेरा, बट तू एंड तेरा, तू एंड तेरा, तू एंड तेरा। वी हैव टू लीड अ लाइफ ऑफ डिटैचमेंट एंड नॉन अटैचमेंट, स्लोली कट द कॉर्ड ऑफ अटैचमेंट। ऐसा करते 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 एक समय आएगा जब देखोगे ये सारा जो अंतःकरण का तूफान जो है ये शांत हो जाएगा। Amazing thing. Meditation will become natural, natural, natural. When there is nothing for you to get connected with the world, automatically the internal instrument will be silent, and God's form will be very clear. So what you're talking about is the internal instrument. Anything else? Any question? You ask. You ask. I have actually two questions. So, both that we just learned that Buddhi is also out from mind, also part of Yes, yes, yes. Of course. Buddhi is the function, deterministic function in our Yes, mind. yes, 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 yes. So, if Buddhi is also part of Maya, and Buddhi doesn't understand grasp Maya, right? Then this determining function of real and unreal, which is Vivek, who is the one doing the? I said Maya has got two functions. Maya functions in the form of aviveka. Maya alone functions in the form of viveka. This is the very beautiful question. Viveka is nothing but Maya's vivek. Maya's vidya shakti expresses it in the form of viveka. माया की अपनी विद्या शक्ति ही है विवेक, और माया की अविद्या शक्ति है अविवेक। So as long as इस पूरे स्टडी के द्वारा क्या हो रहा है पता है, तो विवेक को जगाया जा रहा है। So how do we attract? विवेक को जगाया जा रहा है का मतलब क्या है, माया का विद्या शक्ति काम कर रहा है यहाँ पर। मैं सबसे मैं कहता हूं, आपको लगता है कि आप लोग यहाँ आए हो? नहीं लगता है, जरूर लगता है। आप ही लोग तो गुड़गांव से यहाँ पर टिकट गाड़ी करके आए थे। आप ही को लगता है, आपको लगता है आप लोग यहाँ आए हो? किसी को लगता है? कोई आपको यहाँ पर लाया है, ये अनुग्रह है। दिस इज द मीनिंग ऑफ अनुग्रह। जब भी हमारा जो अंतःकरण जो है उसमें अगर क्लैरिटी आती है, समझ लेना चाहिए ये माया का विद्या शक्ति काम कर रही है। ऑलरेडी माया's विद्या शक्ति इज वर्किंग है। इसका मतलब डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? माँ की इच्छा में हम लोग इधर आए। ऐसे ही बोलिए आप लोग यहाँ नहीं आए हो, आप लोग यहाँ नहीं आ सकते हो। वो अगर नहीं चाहती तो आप लोग यहाँ नहीं आ सकते हो। आपकी विवेक जागृत नहीं हो सकती। वही सबको अविवेक में भी रखती है, वही सबके अंदर विवेक भी जगाती है। महाद्भुतम अनिर्वचनीय। क्या है? क्या है? महाद्भुतम क्या है? महाद्भुतम 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 महाद्भुतम। There's no rhyme and reason to it. आज हमारे अंदर अगर थोड़ी सी ईश्वर के प्रति प्रेम अगर जग रहा है, ये उसी की कृपा है। अनुग्रह, इस ग्रंथ का शुरुआत कहाँ से हुआ था? ईश्वरानुग्रह। तो हम ये सोचने की गलती ना करें कि हम यहाँ पर आए हुए। कोई सन्यासी बन सकता है क्या? हाउ डेयर! अगर ये होता है, ये इसी देवी माँ के अनुग्रह से होता है, नहीं हो सकता है। किसी के अंदर भक्ति जन्म सकता है क्या? वो देवी माँ के अनुग्रह के बगैर किसी के अंदर भक्ति भी नहीं आ सकती, ज्ञान भी नहीं आ सकता। सो अंडरस्टैंड, विवेक इज द माया's anugrah. Maya's vidya shakti is what expresses in the form of, if there is some viveka now functioning in your mind, it is owing to this Mahadbhutam Anirvachaniyam Shakti's
Vidya Maya functioning on your mind. She is making it possible. This is no one else's case. Understand? She is making this possible. She is breaking the bondage. She can bind, she liberates. There is no rhyme and reason to it. अगर आपके अंदर अभी थोड़ा सा भी विवेक जागृत हो रहा है, ये कोई और नहीं कर रहा है. She is doing it. That Mahadbhutam Anirvachaniyam Shakti. She is doing it. How far is she? We can feel it. It's all divine. It's all her grace is showering. हम ग्रेस अनुग्रह की बात करते हैं. यही तो अनुग्रह है. इसी को अनुग्रह कहते हैं. जब हमारे अंदर ईश्वराभिमुख होने की टेंडेंसीज पैदा होती हैं, वो इसी महाशक्ति के, विद्या शक्ति के माध्यम से ही होता है. नहीं तो नहीं हो सकता. करोड़ों लोग मॉल में बैठे हैं, सिनेमा हॉल में बैठे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं. इट्स ऑल अविद्या शक्ति इज वर्किंग ऑन देम. दे आर ऑल बाउंड. What are you doing in this hall, in this jungle? What are you doing here? I'm asking you this question. इस बोरिंग जगह पे बैठ करके आप लोग क्या 3 दिन से ये बोरिंग प्रवचन आप सुन रहे हो? क्यों बैठे हो यहाँ पर? मैं पूछ रहा हूँ, कारण ये आपको अगर एंजॉयमेंट लगता है, ये ईश्वर के अनुग्रह से हो रहा है. आपको इसमें रस मिल रहा है कि नहीं? ये इसी के अनुग्रह से हो रहा है. दिस इज व्हाट इज अनुग्रह. भगवान में रस भी उसी के अनुग्रह से आता है. इन लोगों को क्यों रस नहीं मिलता है भगवान की बातों में? सिनेमा हॉल में बैठे हैं, पार्टी कर रहे हैं, रेव पार्टी कर रहे हैं, उनको भगवान में रस नहीं आता. अविद्या सब बांध के रख देती है. आप लोग यहां बैठे हो क्यों? विद्या. उसी के अनुग्रह से ये संभव होता है. ईश्वर अनुग्रह नहीं है क्या? बोलो. आप लोग ईश्वर के अनुग्रह से यहां हो, ईश्वर के अनुग्रह से ये चल रहा है. ये सब ईश्वर अनुग्रह का ही लक्षण है. It's a tremendously important point. So we should understand. We should be always understanding God's. This is what Sri Ramakrishna says. भगवान का अनुग्रह सब समय है, हम पहचान नहीं पाते. और जितना मन काम और कांचन में डूबा रहेगा, उतना हम भूल जाते हैं इस बात को. समझ रहे हैं ना? Why Sri Ramakrishna and Shankaracharya is talking about sannyas? The more and more we turn our mind towards God, we will understand ईश्वर's अनुग्रह. ईश्वर के अनुग्रह से कौन बंधन से मुक्त हो सकता है? ईश्वर के अनुग्रह के बगैर असंभव है. नेक्स्ट क्वेश्चन. यस सर. We hear about self-realization, God's realization, and pursuit of moksha. So, what is the difference, or is it the same? God realization, it is same. Actually, God realization कुछ नहीं है. मोक्ष is the main point. बंधन है, बंधन से मुक्ति है. गॉड क्या है? अगर ये गॉड बड़ा है, ये सब बड़ा, ये जो इंग्लिश टर्म्स बड़े deluding and misguiding terms. God, the God term is very deluding. Actually, English language is a very poor language in conveying these ideas. God Semitic idea में Semitic religions जो है, Semitic religion आप समझ रहे हैं? मैं जस्ट उदाहरण देता हूँ. Semitic religions में गॉड क्या है? गॉड कहीं ऊपर है. दुनिया अलग है, गॉड अलग है. गॉड 7वें आसमान बादल के पार वहां बैठ करके दुनिया पर नियंत्रण करते हैं. गॉड से यही तात्पर्य है. हम ऐसे गॉड को मानते ही नहीं है. वेद हिंदू धर्म का गॉड क्या है? गॉड नहीं है, ईश्वर तत्व है, परम ब्रह्म है, जो अंतर्यामी है. इसलिए देखिए, हिंदी भाषा में आप देखेंगे सभी लोग, ये सब सिनेमा में सब लोग सुनते होंगे, ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला. ऊपर वाला क्या है? भगवान ऊपर है क्या? बट इट इज सो कॉमन एंड वोकैबुलरी है ना. इट इज ऑल सेमेटिक आइडिया. भगवान ऊपर थोड़ी है, ये सेमेटिक आइडिया है. हिंदू धर्म में ऊपर नहीं है, ऊपर वाला नहीं है इधर. लेकिन हम भाषा में ये सब कहां से आया है? दिस आर ऑल फॉरेन अधार्मिक आइडियाज, विधार्मिक आइडियाज. लेट अस मेक दिस पॉइंट वेरी क्लियर. वेदों की जो ईश्वर की जो धारणा है, वो ऊपर बाहर नहीं है. इज अ सोल ऑफ अवर सोल हियर. तो जब हम मुक्ति की बात करते हैं, मुक्ति और बंधन क्या है? अपने स्वरूप को ना जानना, ये बंधन है. स्वरूप को जब हम जान गए तो हम मुक्त हो जाते हैं. और ये स्वरूप क्या है? सत चित आनंद है, एक चैतन्य सत्ता है.
जो अभी हमारे अंदर विद्यमान है, वही हमारा सत्य स्वरूप है। उसी को हम लोग भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। हमें उसकी धारणा नहीं होती है, तो हम इन विभिन्न रूपों का हम सहायक लेते हैं। These are all just helping factors. आप उसी सच्चिदानंद ब्रह्म को अनंत रूपों में आप देख सकते हो। वही शिव के रूप में है, वही राम के रूप में है, वही कृष्ण के रूप में है, वही रामकृष्ण के रूप में है। आप किसी भी रूप को पकड़ के वहां पहुंच सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एक रूप है। अगेन मेक दिस पॉइंट वेरी क्लियर। ऐसा नहीं है कि ये एक ही रूप है। आप जिस किसी भी रूप को पकड़ करके उस सच्चिदानंद ब्रह्म तक पहुंच सकते हो। लक्ष्य है सच्चिदानंद ब्रह्म। उस ब्रह्म का जब ज्ञान होता है तब व्यक्ति मुक्त होता है। लक्ष्य मोक्ष है और मोक्ष आता है आत्मज्ञान से। उसी को हम दूसरे भाषा में भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन, ईश्वर प्राप्ति, ये सब शब्द हम लोग यूज करते हैं, बट ऑल ऑफ दैट मीन्स आत्मज्ञान, नथिंग एल्स, अपने स्वरूप का ज्ञान। अच्छा, यू विल डू इट। Yesterday you was talking about we are not the body, and but so we are the Atman. We are not the body. We are not the body. But if like someone is terminally ill, or if someone doesn't have an arm or a leg, how can they focus on self-realization? It becomes difficult. Why? Acha, you are talking about a condition where somebody is ill. Why ill? Even now we are finding it difficult. You don't have to fall ill. Even now in a healthy state, are you convinced that you are not the body? It is not that easy. But at least let us know the truth. Let us start somewhere. Now we have taken it for granted. At least let us start questioning it. That is the starting point. So you are talking about a terminally ill person who has lost his hand and feet or something. So how can he focus? I am asking you. You are a healthy person. Is it not present you are healthy? Can you really believe that you are not the body? You can't. It is difficult because we have never done that. But at least let us listen to it. Let us start questioning it. Let us not take it for granted. हम लोग मान के चल रहे हैं कि हम इतने ही हैं। नहीं, आप इतने नहीं हो। ये शुरुआत है। आप आगे जाओगे तो थोड़ा करके क्लियर होने लगेगा। So this is just a statement which should awaken you. You should start the inquiry. Now see, we have not studied anything. अरे हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है इसमें। तो इसमें मैं कह रहा हूँ, इसमें इतना सुंदर डिस्कशंस है। More deeper and deeper if you go, you will see great clarity will come about what you are. We have not discussed those points. So, my dear devotees, I am requesting all of you that you all have to go back and you should study this whole book in detail. Wonderful, amazing details are there in this book. We have just discussed how much? 20 slokas we have discussed. There are 580 beautiful slokas in this. Amazing clarity. But we need proper guidance. Huh? Proper guidance for this book. Yes, of course, that is what to do. You come for the satsang again. You can come to my office. Yes, yes. What do you think? About the internal sannyasa we have spoken about, right? See, when we practice these things on a daily basis, the tendency naturally changes. You want to do less and less of outer activities. So naturally, yes, I agree with you. What happens is it creates a conflict within the atmosphere that we have created. See, because the atmosphere that I am in today was created with a different understanding. Yes. 10 years ago, when the gospel came to me. Now that understanding is completely washed out. Right? Now, with the new understanding, now the priority is this jnana, this. And so the fire, the inner feeling, I want, as any time I get, I want to use only for this. For the basic things, I do. Exactly. The rest of it, I want to use it for this. But the world doesn't people whom I have chosen to live with. That's my own making. Right? They want me to come and do 100 things. And unfortunately, today, these days, as I said, we don't do Vihita Karma, we do everything else we do. See, at least we were following the Vedic tradition. We would know, we'll do Vihita Karma. Anything apart from that is not required. But today's life is not around that. Right? We do so many things which are not required in terms of functions, in terms of even functions. See, there is Vaidika, Laukika, Dipala, and so many, we get into so many different things. So it's like the cloth on the thorns.
How do you take this cloth without tearing? Or is it to be torn? That's What's your name? Suresh. Suresh, sit down. Very good question. See, I'll tell you, I'll simplify the whole thing. This Vaitika, Vihita Karma, Kamya Karma, Nishita Karma, just forget about it. Karma. Nobody can be without karma even for a single moment. We all have to. Nahi kaschit kshanamapi jatu tishtati akarmakrit. एक क्षण के लिए भी कोई भी क्रिया किए बगैर रह नहीं सकता. क्रिया तो करना ही पड़ेगा. Now, when you have understood that priority of life is this, and you are in a surrounding which is not favorable, learn to live with this conflict. Number one, this conflict will remain, and this is the case of all the sadhakas. The resolution of this conflict lies in only one thing. You know, what is that factor? When you begin to see God's hand in everything, you see your conflict will begin to slowly evaporate. See, the surrounding in which you are, it's your own creation. Now, if you want to get out of it, all that you can do is, you can pray to God. Pray to God. Pray to God honestly. God, I don't want this, but my surrounding is this. And with Ishwaranugraha, this Pagli, she is the Kajabi. She will change the surrounding. That is the only way to resolve this conflict. Second point, which you should remember, कर्म तो करना ही है आपको तो. कोई हम लोग भी तो करते हैं. कौन चुप रह सकता है? निष्काम कर्म, निस्वार्थ कर्म. जो भी कर रहे हो, do not do anything for one's selfish motives. If you can take care of this factor, you will progress in spiritual life. Karma yoga becomes the very foundation of spiritual life. Karma yoga, very important. Action done without any selfish motives, without any desires. Nishkama, niswartha, kriya. Don't worry, you don't have to think about vihita karma or nishita karma or any of these things. Whatever we are doing, we have to ensure that it is nishkama and niswartha. The best thing is, keep on doing good to others. Swami Vivekananda beautifully said, अच्छा कर्म करते जाओ, दूसरों के लिए कर्म करते जाओ. Do good, be good and do good. Keep on doing good to others without expecting anything in return. This is the attitude of a serious spiritual aspirant. He will not even wait for any thanks to come from anybody. What a beautiful attitude is. Swamiji says, if you are giving 10 rupees to a beggar, be thankful to that beggar that he has allowed you to exercise your charity. You understand? If you are giving 10 rupees to a beggar, we think that, oh, हम बहुत बड़ा मेहरबानी कर रहे हैं उस beggar के ऊपर. नहीं. That beggar is not beggar, it is God standing in the form of beggar. And by giving 10 rupees to that beggar, we have become dhanya. We should thank that beggar कि भगवान आपने मुझे एक मौका दिया. Change these attitudes. Now you apply this principle to everything that you are doing. Whatever you are doing, do it with a sense of worship. That is the way to overcome these conflicts. Then there is no conflict. You will always have to worship God through your actions, through your thoughts, through your feelings, through your whole life itself. Your life itself should become an unceasing act of worship and prayer. Yat yat karma karomi tat tat akhilam shambho tavaradhanam. What beautiful. These are all in the Shastras. Atma tvam girija mati sahachara prana shariram braham puja te vividhoga bhoga rachana nidra samadhi sthiti sanchara padayo pradakshana vidhi stotrani sarva giro yat yat karma karomi tat tat akhilam shambho. Whatever actions we do, it is all Ishvara's aradhana. This is where you can overcome all the conflicts. So it's 4 o'clock. Let us stop here. Dear devotees, it was really wonderful for me to discuss with you for the last 3 days. I really enjoyed my interaction with you all. And I thank Pujyapat Swami Shantatmanan Ji Maharaj. आप मुझे ये कुछ बोल रहे हैं क्या? अच्छा, आप बोल रहे हैं? महाराज आपने बताया कि वर्ड और भगवान एक ही है. वर्ड नहीं है, भगवान ही है. दो चीज नहीं है यहाँ पर. सब समय जान लीजिए इस बात को. ये वर्ड हम हमारे भ्रम में देख रहे हैं. सिद्धांत ये है, ईश्वर ही है और कुछ नहीं है. आप बोलिए. वर्डिंग डिजायर्स को गिव अप क्यों कर रहे हैं भगवान? तो मत कीजिए. आप डिजायर लेके रहिए, देखिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है. जानना चाहिए.
नहीं, consequences. As I said, no, go by consequences. अच्छा, आप इतने अब आपका जो भी उम्र हुआ होगा, डिजायर को फॉलो करके आप कहाँ पहुंचे? डिजायर को कभी भी आप फुलफिल कर पाए क्या? डिजायर को फुलफिल करते करते आप कभी भी परिपूर्ण रूप से तृप्त हुए हैं क्या? कोई आज तक हुआ क्या? See, the go by consequences. Shastras is not imposing anything. Always study. It's a deep study of the human experiences. What is happening to this system? मैं आज 50 या 55 या 60 या 70 साल का हूं। 70 साल मैंने एक प्रकार से जीवन जिया, मुझे कहां ले गए? कामनाएं, वासनाएं और कामनाओं की पूर्ति मुझे कहां ले गए? फाइंड आउट। और जब आपको समझ में आएगा ये सब निरर्थक है, आप खुद छोड़ दोगे। तो ये प्रश्न नहीं उठेगा कि why should I give up desires? Desires is the mother of all the sufferings we have in life. बस So one minute, just 2 words. I am extremely thankful to Pujyapad Swami Shantananda Maharaj for having given me a chance to come here. And I really enjoyed your devotees, interacting with all of you. It was a wonderful group, and I should thank you for this beautiful participation and your earnestness. You all have attended this class with wonderful regularity and sincerity. And by the grace of that Pagli, everything has been so beautifully conducted. And once again I thank the revered Shantananda Maharaj for having given me a chance for this seva. Maharaj, thank you so much.